Hello students, today we are going to study 10th standard history, the remaining part of the second chapter. In the first video, we have studied that the historiography in the ancient period, the historiography in the medieval period and the historiography in the modern period. Now in this video, we will study the remaining part, means the historiography Indian tradition. Let us see the topic. Students, Indian historiography, various ideological frameworks. Indian historiography, various ideological frameworks. Indian history is depend on various ideological frameworks. Different types of history is there that we will see in this video. First, we will see the topic colonial historiography. Types of historiography: colonial historiography, orientalist historiography, nationalistic historiography. Then historiography in the post-independence era, after the independence, which historiography was there. Historiography in the post-independence era, in that first is Marxist history, second is subaltern history, and third is feminist history. That we will study in detail one by one. Students, first we will study colonial historiography. Colonial historiography means when British rule was there, British colonies was there in India. The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers. When British rule was there, that time some of the British officers, they wrote the history about India, and some Christian missionaries also. Whatever they wrote, their writing were used to justify the colonial British rule. They were justifying the colonial British rule. They wrote the history about India according to the colonial British rule. In this, we will see the textbook, the 5 volumes of Cambridge History of India. See, the name of the book was Cambridge History of India. The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 CE. That was very important colonial historiography. Second, the Orientalist historiography. What is meant by Orientalist? Orientalist historiography means many European scholars were interested in the study of civilization of Eastern countries. See, many British officers were there, European scholars were there. They were interested in the study of Indian civilization. Eastern countries means Asian and African countries. Always we are seeing Western countries and Eastern countries. Western means European countries and Eastern countries means Asian and African countries. Many scholars were interested in the civilization. Civilization means सभ्यता. सभ्यता मीन्स एखादे देश की चाली रीति या संस्कृति परंपरा. दैट ऑल विल कम इन सिविलाइजेशन. तो बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स, दे वेर इंटरेस्टेड इन civilization of Eastern countries. Some of them felt admiration and respect for these countries. इन स्कॉलर्स को जो ईस्टर्न कंट्रीज को चाहते थे, उन स्कॉलर्स को इन ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में लिखना था. वो रिस्पेक्ट करते थे इन कंट्रीज का. दिस स्कॉलर्स वेर नोन एज ओरिएंटलिस्ट एंड द हिस्ट्री written by them was known as Orientalist historiography. Students, did you understand what is Orientalist historiography? Orientalist historiography means some scholars, European scholars, they were interested in the glory of Eastern countries, prosperity of Eastern countries, and they felt admiration and respect for these countries. They were having respect for these countries. These scholars were known as Orientalist. ऐसे स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट बोलते थे. और उन्होंने जो लिखा हिस्ट्री ऐसे कंट्रीज के बारे में, तो उस हिस्ट्री को बोलते ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. द थर्ड टाइप ऑफ हिस्टोग्राफी इज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. फर्स्ट, द इंडियन हिस्टोरियंस who were trained in the British educational system. See, nationalistic historiography. The Indian historians, now Indian historians are there. Historians means इतिहासकार, जिन्होंने हिस्ट्री लिखा.
the Indian historians who were trained in the British educational system. When British rule was there, British colonies were there in India. That time they started their educational system, and our Indian people, they were taking British education. The some Indian historians who were trained in the British educational system, ऐसे इंडियन इतिहासकार जो थे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़े लिखे थे, दे रोट द हिस्ट्री अबाउट एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया के प्राचीन समृद्धि के बारे में लिखा, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, इंडिया के बारे में लिखा अपने इंडियन इतिहासकारों ने. दिस हिस्ट्री इज नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. नेशनलिस्टिक मीन्स अपने देश के प्रति प्रेम की भावना. और इंडिया के बारे में जो लिखा इंडियन हिस्टोरियंस ने, उस हिस्ट्री को बोलते नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. विष्णु शास्त्री चिपळूणकर क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री written by British officer. We have seen here in colonial historiography some British officers wrote the history of Indian glory or Indian history, but they were prejudiced, means इंडिया के बारे में उन्होंने गलत सलत लिखा था उनके हिस्ट्री में. तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर was the nationalistic historian. He criticized the prejudiced history written by British officer. उन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाया था उनके लिखान में. तो इसलिए विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने उनके लिखने का विरोध किया. सम अगेन नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस वेर देयर. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्रलाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्राजी, वासुदेव विष्णु मिरासी and Anant Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars, famous scholars among the nationalistic historians. These all were the nationalistic historians. Okay students, now we will study the historiography in the post independence era. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कौन सी हिस्टोग्राफी फेमस थी, पॉपुलर थी? हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. एरा मीन्स पीरियड. उस पीरियड में कौन सी हिस्ट्री थी? द हिस्ट्री ऑफ दिस एरा वाज इन्फ्लुएंस मेनली बाय 3 आइडियोलॉजीज. इंडिपेंडेंस के बाद में की जो हिस्ट्री थी वो 3 विचारधाराओं के ऊपर आधारित थी. एक थी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरी थी सबअल्टर्न हिस्ट्री और तीसरी थी फेमिनिस्ट हिस्ट्री. वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल दिस 3 टाइप्स. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मीन्स ऐसी हिस्ट्री जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है. इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने मार्क्स के विचारों के आधार के ऊपर हिस्ट्री लिखी. दैट इज नोन एज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर एट द सेंटर. कार्ल मार्क्स के हिस्ट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रिसोर्सेस, सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के तरीके, वेज क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन. सिर्फ पुरानी बातों को हिस्ट्री में लिखना मीन्स हिस्ट्री नहीं था कार्ल मार्क्स के विचारों से. कार्ल मार्क्स का विचार था कि ऐसी हिस्ट्री लिखनी चाहिए जिसमें समाज का हर एक क्लास हो. समाज सोसाइटी के जो क्लासेस है उनके बारे में लिखना. वी विल सी Marxist history. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. Marxist historians ने कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा. इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, अलग अलग जातियों का जो प्रचलन था, उसके बारे में लिखा. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. These were the Marxist historians. Second is subaltern history. What is meant by subaltern history? Students, listen carefully. The role of the Italian historians Antonio Gramsci is very important.
सबल्टर्न हिस्ट्री में ये नाम फेमस है. एंटोनियो ग्राम्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. सबअल्टर्न हिस्ट्री सोसाइटी का जो बॉटम मोस्ट क्लास है उसके बारे में लिखना है. इन फैक्ट द सबअल्टर्न मीन्स, सबअल्टर्न का मीनिंग ही है द बॉटम मोस्ट रैंक. सोसाइटी का जो निचला स्तर है उसके बारे में हिस्ट्री लिखना मीन्स सबअल्टर्न हिस्ट्री. इसमें सबअल्टर्न हिस्ट्री में फेमस नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले. शूद्रा एंड अतिशूद्रा. द टर्म्स शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के जो निचले स्तर के क्लास है शूद्रा एंड अतिशूद्रा, उनके बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा. शूद्रा, शूद्रातिशूद्रा. द नेम ऑफ द बुक वाज शूद्रातिशूद्रा. Then Dr. Ambedkar is the important name in this history. He wrote Who Were the Shudras. Ambedkar wrote focusing on this fact, who were the Shudras and the untouchables. Untouchables means untouchables means जिनको टच नहीं करते थे, स्पर्श नहीं करते थे, अछूत, उनके बारे में बुक लिखा. So these names are the important names in subaltern history. The last is feminist history. Student, listen. Feminist history. Feminine. In feminist, female word is there. Over a long period of time, mainly male scholars were involved in the writing Indian history. पुराने जमाने से मेन आदमी लोग ही लिखते थे हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बारे में. Till that period, the role of women in history remained neglected. हिस्ट्री में वुमेन का रोल ही नहीं था. वुमेन के रोल को निगलेक्ट किया गया था, दुर्लक्षित किया गया था. वुमेन को कुछ वैल्यू ही नहीं थी. वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री टू रीथिंक द वुमेन पोजिशन इन द हिस्ट्री. इस पीरियड में फेमिनिस्ट हिस्ट्री जब लिखा गया तो वो है फीमेल ने लिखी हुई हिस्ट्री. वुमेन हिस्टोरियंस रोट द हिस्ट्री and that history is known as feminist history. Women also started writing history to rethink the women's position in the history. Women ने अपनी एक पोजीशन बनाई हिस्ट्री में. उनमें कौन कौन है देखेंगे. Among women authors, स्त्री पुरुष तुलना. This ताराबाई शिंदे, she wrote the book स्त्री पुरुष तुलना, published in 1882. Then in 1888 the book written by Pandita Ramabai was published, entitled, the name of the book was The High Caste Hindu Woman. Again many women wrote about the history, that were Meera Kosambi. Meera Kosambi wrote the book Crossing Threshold, Feminist Essay in Social History. These were the important names. Again, after that, Pandita Ramabai, Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor in India, they also wrote about history. So, students, we have studied here the different types of Indian historiography and various ideologies frameworks. Okay, student, learn the video, see the video and learn carefully. Okay, thank you.